नमस्कार मु आपन स्वागत करुच्ची अड्डा 24/7 ओपीएससी चैनल रे काली हमें डिस्कस करथिले पार्ट 1 रो PYQs 17 टू 2022 सेटा पार्ट 1 थिला आउ किछि क्वेश्चन मु कहितली आपन को कि किछि क्वेश्चन अछि आजि हमें डिस्कस करबा सेटा को ठीक अछि चलो तो स्टार्ट करबा डिस्कशन जो माने ऑनलाइन अछंती से माने प्लीज शेयर करि नियंतु आपनकर फ्रेंड्स मानक सहित जो ग्रुप रे आपन ऐड अछंती सहित शेयर कर सो विल स्टार्ट द डिस्कशन वेरी सून स्टार्ट करिवा ठीक अच्छे 1722 पर्यंत जो प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस करछे खास करके इकोनॉमिक्स रो नेक्स्ट जिनस होची गोटे कोटेशन आपण देखि परिबे बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर रूजवेल्ट को ना आपण सुनिथिबे रूजवेल्ट कहंती जदि आपण मन रे विश्वास अछि कि हम जिनस करि परिबी तबे हाफ वे यू आर हाफ वे देयर और हाफ ऑफ द वर्क इज डन निरंजन पुंजी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून एवरीवन so please share this session so that we can start it and please answer करिवे आपण so ये कोटेशन होची बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर रूजवेल्ट निज ऊपर विश्वास रखिबा निहाती दरकार PYQs इकोनॉमिक्स 1 आवर ऑलमोस्ट सेशन हमें एठी डिस्कस करिवा ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करिबा आज डिस्कशन which of the following indicators is not used to calculate human development index ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जितला में कैलकुलेट करूचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड आंसर होची नॉट यूज्ड देछि ठीक अछि जनरली जदि आपण देखिबे एजुकेशन हेल्थ एंड जो पर कैपिटा इनकम जोटा में कहूचे या आपण कहि परिबे रिलेटेड टू लाइक इनकम जोटा में कहूचे तो ये तीनोटी इंडिकेटर हमर रुचि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे तेणु एजुकेशन अच्छी पर कैपिटा इनकम अच्छी हेल्थ सेगमेंट रे ही आपनकर आसीबा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लॉन्जिविटी आपनकर केते तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जिनसटा को कैलकुलेट करे नाही सेटा होची सोशल इनइक्वालिटी को भली भाव रे होची कास्ट डेप्रिवेशन ए सब जिनस गुड़िक जो अच्छी ताकू कैलकुलेट करे नाही सो सोशल इनइक्वालिटी आपण कहि परिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रेकमेंडेड द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एक्सक्लूसिवली आंसर करिवे इजी क्वेश्चन आपण माने ही आंसर करिवे एटा को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आंसर करंदु न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कौन थिला अर्बन और रूरल अलगा अलगा थिला आपण माने जानिथिबे अर्बन पई आपनकर थिला केते एंड रूरल पई केते थिला अर्बन पई आपण जानिथिबे 2100 या 2100 कैलोरी रूरल पई आपण थिला 2400 कैलोरी तो ये कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन पई किए रेकमेंड करथिले आंसर करंतो आंसर होची अलग कमिटी मन रखते बेटा को अलग कमिटी तेंदुलकर कमिटी काली मु आपण सते डिस्कस करथिली सुरेश डी तेंदुलकर से कोन कहिथिले कंज्यूमर या कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेसिस रे सेटा को हमें कैलकुलेट करिथौ पॉवर्टी को तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट अनुसार कैलोरी बेस्ड रिक्वायरमेंट्स गुडी को सी होची अलग कमिटी द्वारा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्स टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी हाउ डज द UN currently measure extreme poverty people who are unemployed are unable to access welfare benefits people who live on less than $5 a day people who claim to be living in poverty people who live on less than $1.5 a day आंसर करंतु
यूएन को भली भाबरे पॉवर्टी को मेजर करे ये होची सिंपल क्वेश्चन आंसर करंतु एनी आइडिया देखो तो यूएन पॉवर्टी को भली भाव मेजर करे ना इफ ए पर्सन इज अर्निंग $2 $2 then that person is under poverty $2 $1.25 that person is under extreme poverty ये दुईटी जिनसों को मन रखते हुए यूएन कौन कहूची यूएन मेजर करूची $2 US dollar that person belongs to poverty या under the poverty $1.25 extreme poverty right extreme poverty so answer is what D next which is the highest allocation ministry in budget 21-22 highest allocation ministry 21-22 आंसर करंदु 21-22 21-22 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये तो जब एग्जाम ही तला से वर्ष पचार थला तो आपण 24-25 डेटा भी देखि नेबे 24-25 रे केवे या को मिनिस्ट्री को अधिका बजेट एलोकेट करा जायतला 24-25 को सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड ए न्यू सीरीज of consumer price index for industrial workers with dash as the base year answer karantu dash as the base year please answer consumer price index आंसर कौन हम आंसर हूँ 2016 बेस ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एटा को देखि नेबे आपण बेस ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स कारण आपण जानि छथि सीपीआई केवल गोटे नुहे डिफरेंट सेगमेंट रे एटा कैलकुलेट करा जाय गोटे छि सीपीआई अर्बन रूरल कंबाइंड इंडस्ट्रियल वर्कर एग्रीकल्चरल लेबर तो ये जो डिफरेंट सेक्टर्स मान जनरली इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट करा जाए सीपीआई थ्रू रे सीपीआई कंबाइंड थ्रू रे अर्बन प्लस रूरल ठीक अच्छे इंडस्ट्रियल वर्कर इन द सेंस कि जो आपनकर रिविजन होची डीए रिविजन होची ठीक अच्छे इंसेंटिव दिया जाउची सेटा कहा बेसिस रे सेटा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर बेसिस रे दिया जाउची एग्रीकल्चर लेबरर सीपीआई बेसिस रे कोन डिसाइड करा जाउची मिनिमम वेज जो अच्छे आपनकर रूरल इंडिया रे ता मध्य डिसाइड करा जाउची सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर हिसाब रे तो यार बेस ईयर केते डिसाइड करा जाइची 2016 ठीक अछि नेक्स्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी ऑफ इंडिया इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू जीडीपी इंडिया इज इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स remaining the same over the years decreasing over the years at times increasing at times decreasing over the years answer is what 1950 summary je dekhibe primary sector ro contribution was around something 70 to 75% even 1950 re sorry 24 jodi dekhibe
लेटेस्ट जो अच्छी आपनकर 17 to 18%। तो 1950 रू 1950 रू 2024 पर्यंत प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज डिक्रीजिंग ओवर द इयर्स। ठीक अच्छी डिक्रीजिंग। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज बाय द सर्विस सेक्टर, that is something 50 to 55%, 50 to 55%। next, Robin Hood effect is related to which of the following? Answer karandu। Robin Hood effect is related to which of the following? Please answer। आंसर कौन हम? रॉबिनहुड जो टर्म टी कौन पाई यूज करा जाए? रिच सेक्शन टू आने की पुअर सेक्शंस को दबा, तो ऑब्वियसली इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। 1970s रे रॉबिनहुड कॉन्सेप्ट काफी फेमस थिला इंडिया रे। मूवीज गुडा रे, बॉलीवुड मूवीज रे अमिताभ बच्चन द्वारा यांग्री यंग मैन कहीं ना 1970 समय रे या 1990 पूर्व जदि देखिए बॉलीवुड रे सोशलिज्म डोमिनेट करथिला। बॉलीवुड रे सोशलिज्म डोमिनेट थिला, सेति आपन को देखिबा को मिलथला कोन ना एंग्री यंग मैन रो स्टोरी देखिबा को मिलथला। आपन को एंग्री यंग मैन रो स्टोरी आपन को देखिबा को मिलथला। ठीक अछि। So income redistribution. Next, out of the four concepts of money supply used in India, ये क्वेश्चन हमें काली भी डिस्कस करे थे पोस्ट ऑफिस सेविंग, कारण ये क्वेश्चन रिपीट करा जाइथिला। ये क्वेश्चन आज इट इज रिपीटेटिव थिला, तेणु रिपीट क्वेश्चन एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो। तो आंसर कौन थिला? M2 M4 जो माने काली रे सेशन देखिथिबे M2 एंड M4। M2 रे भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अछि, पोस्ट ऑफिस सेविंग और M4 रे भी आपनकर पोस्ट ऑफिस सेविंग रोची। काली रे सेशन जो माने देखिथिबे से माने एटा को कनेक्ट करि परिबे। ठीक अछि। आंसर होउची कोन ना डी। आंसर होउची डी। नेक्स्ट, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए व्हिच टाइप ऑफ बॉडी? IRDA। IRDA is a which type of body? आंसर करंदु। IRDA is a which type of body? IRDA is a statutory body, कारण 1999 रे गोटे एक्ट आसीथिला जा थ्रू रे IRDA को 2000 मसिया रे ताकू सेटअप करागला, एस्टाब्लिश करागला। ठीक अछि। स्टैट्यूटरी बॉडी एज पर द एक्ट 1999। IRD रा काम कोन? इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी। IRD रा काम कोन? मेन इंश्योरेंस रेगुलेटरी, जते इंश्योरेंस गुडी को कंपनी गुडी को अछंदी तांको रेगुलेट करबा। जेमती सेबी को सेबी काहा को रेगुलेट करे? स्टॉक मार्केट को। RBI काहा को रेगुलेट करे? मनी मार्केट को। सेमती ये काहा को रेगुलेट करे? IRDA रेगुलेट करे इंश्योरेंस मार्केट को। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए स्मार्टफोन एप्लीकेशन आई हरियाली टू इंक्रीज ग्रीन कवर? आंसर करंतु। आई हरियाली टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपण माने पढ़ी थिबे। व्हिच स्टेट? पंजाब। मन रखते बेटा को पंजाब। आंसर होची पंजाब। ठीक अछि। नेक्स्ट, द वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे? द वर्ल्ड मिल्क डे। आंसर करंतु। इजी क्वेश्चन। द वर्ल्ड मिल्क डे। आंसर कौन हम? 1 जून। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक अछि। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन?
headquarter of United Nation Economic and Social Council. आंसर करंतु. इजी क्वेश्चन एटा कई भी आंसर करना सी Paris. Next, location of sugar industry in India is moving from North India to South India because of the which of the following. आंसर करंतु. Because of the which of the following. एटा आपनकर NCERT बहिरे भी मेंशन अछि 10th class NCERT. Contemporary India 10th class जोटे geography part. Location of sugar industry in India is moving from North India to South India because of which of the following? Cheap and uninterrupted supply of power, high labor cost, well-developed rail network, high yield and high sugar content in the sugar cane. तो आंसर कौन होगा? High yield and high sugar content यानी कि qualitative sugar cane आपन को मिलुची and all time जो meal गुड़ी का अच्छी sugar meal से ବର୍ଷର ସବୁ ମାସ ଏନଗେଜ ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ହାଇ yield ହାଇ production ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଶିଫ୍ଟ ହଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସୋ D is the correct answer. Next, the GST bill which came into implementation from the 1st July 2017 को bill number और को act already काली हमें डिस्कस करिचे यार आंसर कोंदु को bill number और को act थ्रू रे एटा पास करागला कारण सबू बिल जेहेतु पास हुए तेणु बिल नंबर आपण अधिका देखिबे एक्ट कम देखिबे आपण बिल जेतेबेले पास हुए प्रेसिडेंट रो असेंट या प्रेसिडेंट रो सिग्नेचर जेतेबेले मिलिबो सेटा एक्ट रे कन्वर्ट हुए तेणु बिल नंबर आपण को अधिका मिलिबो एवं एक्ट आपण को कम देखा जिवो तो ये होची आपनकर कोन बिल नंबर और एक्ट ए होची आंसर करेक्ट ए होची आपनकर आंसर. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ National Capital Goods Policy 2016? Not the feature. देखिए कौन से कहूँ increase the share of domestic capital goods production, facilitate improvement in technology depth across subsector, increase imports of capital goods, speaks to launch a technology development fund. तो obviously से जो लिखा है सी टाक देखो तो increase imports of capital goods तो national capital goods policy रो main purpose कौन self reliance आत्मनिर्भर तो जदि सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर प्रोडक्शन को बूस्ट करिबा एक्सपोर्ट को इंक्रीज करिबा obviously C cannot be the right option. C cannot be the right option. So C is the correct answer. ठीक अछि. Next, promotion and development of micro and small enterprises by supporting them in marketing of products produced and services rendered by them comes under which policy of government of India? ठीक अच्छी. स्मॉल एंटरप्राइजेस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फर्स्ट देखो उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना पॉलिसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया पॉलिसी स्किल इंडिया पॉलिसी मिशन इंद्रधनुष पॉलिसी यार आंसर कौन हम आंसर कौन हम कहतु से कौन कहूँ देखो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बाय सपोर्टिंग देम इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स produced and services rendered by them. MSME सेक्टर को बूस्ट करबा पई एठी कुआ जाउची. MSME सेक्टर रो उत्पादन को बढ़ाइबा MSME प्रोडक्ट्स को सेल करेबा ये सब जिंस को प्राधान्य दिया जाउची प्रायोरिटी दिया जाउची. तबे फर्स्ट आंसर कोन अछि उज्ज्वला डिस्कम या उज्ज्वल डिस्कम कोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटिंग माने एठी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज विषय कहउची. सो ए इज ऑब्वियसली नॉट द करेक्ट वन. सी देखो स्किल रिलेटेड जिनस मिशन इंद्रधनुष पॉलिसी होची आपनकर बैंकिंग रिलेटेड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स. बी ऑप्शन को देखो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस इन मेक इंडिया पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू ई मार्केट प्लेस आपन जानिथिबे ई मार्केट प्लेस राइट. तो सेहित पई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गुड को प्रमोट करबा पई B, public procurement preference make in India policy. So B is the correct answer. Next, World Economic Outlook reports is published by World Economic Outlook
report is published by which of the following organization? IMF, World Bank, UNCTAD and OECD. World Economic Outlook is published by IMF, International Monetary Fund. मन रखते बेटा को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मल्टीपल टाइम्स पचरा जाई छेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sectors is now contributes to the largest percentage in towards or in total GDP or GNP? को सेक्टर सबुठु अधिका कंट्रीब्यूट करूची ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रे? ऑफ कोर्स आंसर होची सर्विसेज. आंसर होची आपनकर सर्विसेज व्हिच इज समथिंग अराउंड 50 to 55%. Industries होची 22 to 25% and agriculture is something 17 to 18%. ये होची contribution of three important sectors in the GDP. Contribution of three important sectors in the GDP. Agriculture, that is the primary, industry and services sector. Next question. National income in India is estimated by which of the following sanstha, organization? Planning Commission, CSO, Finance Commission and Indian Statistical Institution. आंसर करंदु. प्लानिंग कमिशन, CSO. तो बर्तमान एटा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हे जाइछि जोटा कि NSO सहित मर्ज भी हे जाइछि. बट एज पर दिस क्वेश्चन द आंसर इज करेक्ट. B, CSO, Central Statistical Organization, which has been given the responsibility to calculate national income in India. To lower interest rate, the RBI should what? To lower interest rate, RBI should what? Buy securities, decrease the money supply. If decreases the money supply, that means what? Interest rate को बढ़ाइବାକୁ पड़िବ. RBI has to increase the interest rate. Raise the treasury bill rate. Treasury bill rate बढ़ाइला माने कौन होबो? Treasury bill rate बढ़ाइबा माने कौन? RBI को माने इन्वेस्टमेंट आपण जदि देखिबे अधिका लोक करिवे जदि इंटरेस्ट बढ़ाइबो तबे एटा squeezes the money supply, decreases money supply. Raise the reserve requirement, again that will reduce the money supply. तो से कहूची to lower interest rates RBI should what? RBI should buy securities. जदि buy यानी कि purchase कला तो पैसा कहा को अधिका कला commercial banks पाखु. That means interest money supply will increase and interest rate will come down. So this answer would be what? Buy securities. ठीक अछि. Answer is A. Next. Gresham's law comes into operation when good money is hoarded, good money is melted, good money is exported, good money is hoarded, melted and exported. Answer. Answer करंतु. Gresham's law. तो Gresham's law कौन कहूची? Gresham's law कहूची when bad money, मन रखते बेटा को, bad money drives out good money. Bad money drives out good money माने कौन? Bad money होची corrupted money drives out good money. तो यार आंसर कौन होबो? Good money is hoarded, melted, exported, hoarded, melted and exported. So answer is good money is hoarded. Hoarded in the sense कि ताको आपनो hoard करूचन. You are not saving it. Saving means accounted money. Saving means accounted money. When you are hoarding, that is not accounted one. So hoarding means you are keeping the black money in your a particular place or at your home. So that is corrupted money. Hoarding. Right? So answer is A. Mixed economy means an economy where both agriculture and industry are equally promoted by the state, coexist in the public sector along with the private sector. That is B is the correct answer. Coexistence of public and private sector. ठीक अछि? Mixed economy. Next. Absolute poverty means what? Absolute poverty. Absolute poverty out होची relative poverty.
absolute poverty simply कहि परिबे poverty in terms of absolute sense, that means how much percentage of people are below poverty line या under the poverty. अमित गुड मनी बैड मनी कॉन्सेप्ट इन द सेंस की बैड मनी सिंपली जोटा कि करप्टेड मनी हमें कहूचे, गुड मनी इज जोटा व्हाइट मनी हमें कहूचे, बैड मनी दैट इज द ब्लैक मनी, राइट. सो relative poverty is what? Inequality. तो देखिए absolute poverty in terms of absolute number of people, poverty in terms of the basic minimum calorie requirements, poverty in terms of the prevailing price level, poverty in terms of the absolute level of unemployment. So answer is what? Poverty in terms of the absolute number of people. Let's say 20% of Indian population is living below poverty line. That is 20% of India's people are BPL category, right? So that is absolute sense. Poverty in terms of absolute number of people. Next, who wrote the book Planned Economy for India? Who wrote the book Planned Economy for India? Easy question, discussed multiple times. Who wrote the Planned Economy for India? Answer कौन होगा? Answer कौन होगा बेटा? Answer is M. Visvesvaraya. M. Visvesvaraya जी गोटे इंजीनियर थे. इंजीनियरिंग डे आम सेलिब्रेट करू. M. Visvesvaraya. Yes, correct. Next, nationalization of banks was done with the purpose of what? What was the purpose? Financing the industry, improving credit facilities, consolidating the economy, improving security of deposits. Answer is improving credit facilities. B. Improving credit facilities. B is the correct answer. Improving credit facilities. Kano जेतोले 1969 रे फर्स्ट टाइम पे नेशनलाइजेशन करा गला ता पूर्वरु देखा गला कि क्रेडिट केवल लिमिटेड स्पेस रे ही रहउची, and that too in the urban space, and the people those who can repay back their loan, they are not, or commercial banks were not giving loan to neither agriculture nor आपण कहि परिबे जो रूरल सेक्टर. तो ये सब जगह रे क्रेडिट फैसिलिटीज को इंप्रूव करबा पई, इंप्रोवाइज करबा पई हमें बैंक को राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कलु, राइट. Part 1 again please. Manjulata, which one? Manjulata, which question? Poverty. Manjulata, which question? Please tell me which question you want to me to repeat again. The headquarters of World Trade Organization, WTO headquarter. Answer is Geneva. C. Answer is Geneva. C. Which of the following is true? Which of the following is true about Hindu growth rate or Hindu rate of growth? Hindu rate of growth. Hindu rate of growth concept किए देइथिला. Hindu rate of growth concept देइथिले प्रोफेसर राज कृष्णा. मन रखते बेटा को प्रोफेसर राज कृष्णा कौन पाई देइथिले ना 1950 रु 80 भितरे 3 to 3.5% ग्रोथ रेट थिला इंडिया रो. सित पई से देइथिले exposes low growth occurrence of the Indian economy during 1950 to 80. Liberalization ପରେ growth rate तापर increase ହେଇथिला
वर्तमान रो ग्रोथ रेट जदि ऑन एन एवरेज देखिए 7 रु 7.5%, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 50 to 80 exposes low growth occurrence of Indian economy during 1950 to 80. What are gilt-edged securities? Gilt-edged securities, generally known as the government securities. Government securities, so more reliable, more trusted, more reliable and more trusted. So securities issued by the government, gilt-edged securities. B is the answer. More trusted, more reliable securities issued by the government. Answer is B. Next. One criticism of the Rostow's theory of economic growth is that much available data contradicts his thesis about takeoff stage. There is no explanation of why growth occurs after takeoff. His hypothesis of the stages of growth is difficult to test empirically. आंसर करिवे देखंतु रोस्टो थ्योरी जो अच्छी रोस्टो थ्योरी विषय मु स्लाइटली कहि रखे जो माने ताकू जानी नथिबे रोस्टो कोंती दे फर्स्ट गोटे इकोनॉमी ट्रेडिशनल सोसाइटी रे थिबो फर्स्ट जेमती हंटिंग गैदरिंग ए सब होतला कमर्शियल एग्रीकल्चर किछ नथिला बेसिक हैंड टू माउथ से माने कंज्यूम करूथले नेक्स्ट प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ जेतबे सिविलाइजेशन गोटे जगह से माने सेटअप हले नई कूल रे लेट्स से एग्रीकल्चरल वर्क स्टार्ट हला प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ ये होची सेकंड स्टेज थर्ड से कहउचंदी थर्ड स्टेज दैट इज टेक ऑफ फोर्थ से कहउचंदी ड्राइव टू मैच्योरिटी फोर्थ से कहउचंदी ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजप्शन हाई मास कंजप्शन फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड फोर्थ एंड देन द फिफ्थ पांचटी स्टेज अच्छी रोस्टोंकर तो एठी से जो कहूँ क्रिटिसाइज करा जाउची तो पर्टिकुलरली क्रिटिसिज्म या थिला कि जो स्टेजेस विषय रोस्टो कहउचंती जो रोस्टो कहउचंती ता एम्पिरिकली टेस्ट करवा इज क्वाइट डिफिकल्ट एम्पिरिकली टेस्ट करवा क्वाइट डिफिकल्ट बहुत समय देखा जाए ओवरलैपिंग जेमती टेक ऑफ एंड ड्राइव टू मैच्योरिटी इट्स क्वाइट ओवरलैपिंग आपण ताकू इजीली डेमार्केट करि परिबे नाही तो सेहिते पई एम्पिरिकली एटा को देखिबा भारी कष्ट हुए रोस्टो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड ए कॉन्सेप्ट नेक्स्ट देखिबा व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू राटिफाई जीएसटी बिल आंसर करिवे व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया वाज टू राटिफाई द जीएसटी बिल फर्स्ट स्टेट आंसर होची असम फर्स्ट स्टेट to ratify GST bill answer होची असम next GST was introduced as the amendment act of what आपण देखुथिबे केते थरो माने पचोडचंदी GST को नै तनो क्वेश्चन रिपीट होची असम इट्स नॉट तेलंगाना असम क्वेश्चन रिपीट होची तनो केयरफुल रहिबे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स दे आर रिपीटिंग 122nd bill and 101 Amendment Act ठीक अच्छी yes which of the following denomination note was introduced immediately after announcing demonetization 2016 राति 8 बेले जेतबेले नवेम्बर जेतबेले डिमोनेटाइजेशन हैला इमीडिएट को नोट प्रथमे सर्कुलेट हेतिला इमीडिएटली को नोट प्रथमे सर्कुलेट हेतिला आंसर करंतु
Audit. Auditor class. 2000 rupees of course 2000 এবং 2000 को हमें ऑलरेडी विड्रॉ कर देछु क्लीन पॉलिसी हिसाब रे आरबीआई रो क्लीन पॉलिसी. नेक्स्ट, which one of the following is not a cause of inequality in India? Which of the following is not a cause of inequality in India? Inequality in the ownership of assets, laws of inheritance, corruption and smuggling, growth of service sector in India. Inequality in the ownership of asset obviously creates inequality. Second, laws of inheritance also, jar adhika already property अच्छी से रिच है परिबो तेणु एठी भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रे भी इनइक्वालिटी देखिबा को मिलिबो. करप्शन एंड स्मगलिंग रे भी इनइक्वालिटी देखिबा को मिलिबो. तो आंसर इज व्हाट? डी, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया. तो यह फल रे इनइक्वालिटी हमको देखिबा को मिलिबो नाही. नेक्स्ट, which of the following is not an objective of NITI Aayog? Not an objective of NITI Aayog. First, allocating financial resources to states. Allocating financial resources to states. Second, to foster cooperative federalism. Third, development mechanism to formulate credible plans to village level and aggregate these progressively at higher level to pay attention to the weaker sections of the society. तो यार आंसर कौन? नीति आयोग रो allocation of financial resources तारा काम नुहे. नीति आयोग रो allocation of financial resources तारा काम नुहे. ये काम किए करे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करे, रेकमेंड किए करे फाइनेंस कमिशन करे. जो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल थिबे रखी थिबे जानी थिबे, प्लानिंग कमिशन को क्रिटिसाइज करा जाउथला को ग्राउंड रे ना फाइनेंस कमिशन रो किछि फंक्शंस को ओवरलैप करूथला. फाइनेंस कमिशन रो किछि फंक्शंस को ओवरलैप करूथला, सेत पे क्रिटिसाइज करा जाउथला प्लानिंग कमिशन को. सुपर कैबिनेट बोली एटा को कहा जाउथला. सुपर कैबिनेट, कैबिनेट ऊपर भी आउटे पावरफुल अथॉरिटी थिला. आंसर होची यारो ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement depict the best definition of sustainable development? Best definition, it means optimal utilization of natural resources, sustainable use and natural resources without considering the need of the future generation. Obviously without considering to nuhe. Present generation fulfills its needs while considers the need of the future generation as well. So this is the appropriate, school level ro padi aschu, this is the appropriate definition. School level ro ame padi ki aschu eta. C is the correct answer. Like while using the current generations or while using the resources by the current generation, provided the fact that you are considering the future generations need. Next, which of the following is not a cause of growing consumer goods market in India? Not a cause of growing consumer goods market in India. Growth of middle class in India, urbanization, liberalization policy of government, growing inequality in India. Growing inequality in India. So obviously growing inequality in India is not the cause behind the growing consumer markets in India. ठीक अछि. इनइक्वालिटी जति बढ़िबो तबे डेफिनेटली कंज्यूमर मार्केट बढ़िबो नाही. बट कंज्यूमर मार्केट बढ़िबा को हेले ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया, सेकंड urbanization सपोर्ट करे, थर्ड also liberalization policy of government so that more and more imported consumer goods can be imported or can come to your country. So liberalization policy also promotes it, right? So D होची correct answer. NAFED is a cooperative organization of the state level, national level, district level, panchayat level. NAFED, National Agricultural Federation. So it's a cooperative organization at the national level. Cooperative organization at the national level. Next, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is run by. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is run by scheduled commercial banks, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Ministry of Rural Development and Reserve Bank of India. Answer, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is run by
आंसर कौन होगा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट? इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, मन रखते बेटा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा कौन कहला कि समस्त बैंक अकाउंट खोलो, 1.5 लाख टंका आसीबो तुम अकाउंट को. So that was the promise was given by the government, but actually government intention कौन थिला? More and more people should open their bank account. That means financial inclusion. ठीक है जी? Answer is B. Next. What does it mean by human capital formation? Human capital formation माने कौन? ना गोटे human को capital रे convert करिवा. Capital is a positive term, is an asset. तो ह्यूमन बीइंग को कैपिटल रे केमती कन्वर्ट करी हबो? गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन एंड स्किल, राइट? आंसर देखिबा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मशीन, ग्रोथ ऑफ बैंक डिपॉजिट्स. आंसर इज दिस, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल ऑफ द पीपल. एंड दिस ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल इन नेचर. एटा को मन रखते हुए यूपीएससी रे क्वेश्चन आस्थिला, human capital is intangible in nature. UPSC has already asked this question. Physical capital is tangible, जोटा को अपना टच करी परिबे, जोटा को अपना देखि परिबे. Human capital only you can feel, realize. ठीक अछि? Intangible in nature. Next, the main argument to establish special economic zones. The main argument is to establish special economic zones to give a boost to the export of manufactured goods, to promote export of agricultural goods, boost to domestic demand for manufactured goods, and none of the above. Obviously, answer कौन होगा? To give boost to the export of manufactured goods. Special economic zones. Special economic zones. Special treatment सेमान को मिलुथला. जो इंडस्ट्रीज गुडी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रे थिले, less tax, subsidies, right? Next, Janani Suraksha Yojana is related to what? Janani Suraksha Yojana, 100% centrally sponsored scheme, 100% state sponsored. Center and state has 50-50, fully sponsored by the private sector. Answer कौन होगा? आंसर कौन होगा? 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. आंसर होची ए, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. जननी सुरक्षा इंश्योर 100% like institutional delivery, reducing the maternal mortality. यार होची ऑब्जेक्टिव जननी सुरक्षा योजना. नेक्स्ट, inclusive growth in India can be achieved through a progressive tax, regressive tax, proportional tax, by completely scrapping all taxes. Inclusive growth is possible through a progressive tax. Inclusive growth is objective is progressive tax. देखो तो जननी सुरक्षा योजना जितोळे हमर नेशनल हेल्थ मिशन, बर्तमान नेशनल हेल्थ मिशन को मर्ज कर दिया गला आपनकर जो आरोग्य योजना जो चलची हमर आयुष्मान भारत अंडर रे. तो जननी सुरक्षा योजना 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. मैटरनिटी बेनिफिट्स दिया जाउथला एवं केबे सेटा लॉन्च करा जायथला 2005 रे. 2005 रे लॉन्च करा जायथला एटा को. ठीक अछि? जो माने प्रेग्नेंट लेडी माने थिले सेमान को कैश असिस्टेंस दिया जाउथला. कोन पई कैश असिस्टेंस? कारण न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एनश्योर करेबा पई. कारण जनरली जो वुमेन माने आम कंट्री रे देखिबा को मिले, मोस्ट ऑफ द केसेस रे आपन को एनीमिया प्रॉब्लम देखिबा को मिले. एनीमिया जो आयरन रे डेफिशिएंसी देखिबा को मिले, व्हिच इज समथिंग डेंजरस टू द प्रेग्नेंट लेडी. तो सेति पई जननी सुरक्षा योजना रे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा जाउथला. एवं फाइनेंशियल असिस्टेंस केवल बिफोर डिलीवरी नुहे, इनफैक्ट पोस्ट डिलीवरी केस रे भी देखा जाउथला. पोस्ट डिलीवरी यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड
न्यूट्रिशनल को एनश्योर करबा पे मध्य फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाउतला प्लस फ्री ड्रॉप बैक फैसिलिटीज भी दिया जाउतला वंस यू कम टू द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हॉस्पिटल को आपण आसिले हॉस्पिटल डिलीवरी हला देन व्हेन यू कम बैक टू द होम आपण को फ्री सर्विस प्रोवाइड करा जाउतला स्टेट यानी कि गवर्नमेंट द्वारा राइट तो ये सब फैसिलिटीज गुडो दिया जाउतला जननी सुरक्षा योजना रे नेक्स्ट payment banks are different from other commercial banks in the following ways. These banks only accept deposits, only provide payments and remittances services, only distribute third-party financial products, and accept deposit, provide payments and remittances services, distribute third-party financial products, but are not allowed to lend or issue credit card. D is the correct answer. ठीक अच्छी पेमेंट आम ऑलरेडी डिस्कस करिचे जे क्रेडिट केबे भी दब नहीं पेमेंट ना क्रेडिट कार्ड केबे इश्यू करिवो से डिपॉजिट एक्सेप्ट करिवो से पेमेंट सेटलमेंट रे हेल्प करिवो रेमिटांसेस जो माने इंडिया बाहर जो माने रहउचंदी दे आर सेंडिंग बैक मनी टू देयर पेरेंट्स टू इंडिया से रेमिटांसेस को भी से एक्सेप्ट करिवो एंड थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को मध्य से सेल करि परिवो सपोज जमती इंश्योरेंस ये सब जिनस हला किंतु क्रेडिट आउ लेंडिंग एक्टिविटीज रे से इन्वॉल्व रहिबो नाही यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस आंसर करंतु यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस फर्स्ट स्टेटमेंट कोन अछि नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिड नॉट इवन एन आवर of work during the survey week, number of persons who remained unemployed for a major part of the year, did not find work day or some days during the survey week, none of the above. Answer कौन होगा usual principal status. आंसर होची मन रखते बेटा को नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस को 365 डेज रे रेफरेंस रे कैलकुलेट करा जाए 365 डेज रे रेफरेंस रे सेटा को कैलकुलेट करा जाए यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस को मन रखते बेटा को ठीक अछि जतले सर्वे करा जाए अनएम्प्लॉयमेंट रो सेतबले देखा जाए गोटे पर्सन 365 दिन रो केते पार्ट या केते दिन धरी की ताको एम्प्लॉयमेंट मिली सेटा को यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस बोली कहा जाए नेक्स्ट देखिबा तेंदुलकर कमिटी वाज अपॉइंटेड ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडस्ट्री सेक्टर रिफॉर्म बैंक फ्रॉड एंड पब्लिक वेलफेयर आंसर इज ऑब्वियसली पॉवर्टी एस्टिमेशन तेंदुलकर कमिटी होची सुरेश डी तेंदुलकर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई फ्लोज इन इंडिया ड्यूरिंग द रिसेंट इयर्स को सेक्टर रे सबुठो अधिका एफडीआई आसी इंडिया को आंसर इज ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर जो आईटी बीपीओज ये सब जिनस सर्विस सेक्टर बोली आपण कहि परिबे सबुठो अधिका एफडीआई हमको सर्विस सेक्टर रे देखिबा को मिले आंसर इज बी सो दैट्स इट 17 टू 22 भितरे जो क्वेश्चन गुडी कथिला प्रीवियस ईयर रो ताको हमें डिस्कस करि सारिचे दुईटी पार्ट रे बेसिकली हमें डिस्कस कले काली गोटे पार्ट हमें डिस्कस करथिले आज गोटे पार्ट डिस्कशन कले बाकी मु चेष्टा करिबी बाकी जमती हिस्ट्री अछि बाकी सब्जेक्ट गुडा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपन सामने को आनी के आसीबा पई कारण लास्ट 1 मंथ होची रिवीजन रो टाइम से समय जते मैक्सिमम एमसीक्यूज हमें डिस्कस करिबा एमसीक्यूज माध्यम रे टॉपिक्स को भी डिस्कस करिबा दैट इज क्वाइट इंपोर्टेंट आपण माने भितरु काली प्रश्न मो पाको आसीतला कि को एरिया रो क्वेश्चन आसुची से एरिया को टिके आपण हाईलाइट करंतु से जिंस भी माजी कहि कि क्लास को एंड करिवि सिंपली देखंतु को एरिया को फर्स्ट हमें कवर करिबा फर्स्ट जिंस होची बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को देखिबे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को देखिबे सब बेले आरबीआई एंड बैंकिंग ठीक अछि ये होची फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक होची एसडीजी मो आपन को कहि छी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी ठीक अछि थर्ड होची आपनकर स्कीम्स गुडी को अछि इकोनॉमिक्स रो जो स्कीम्स गुडी को अछि ताको भी मध्य कवर करिवे ठीक से फोर्थ होची पॉवर्टी एंड इट्स एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट गुडी को जो अछि हेड काउंट रेशियो हो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो रिलेटिव पॉवर्टी हो ठीक अछि ये सब जिंस
फिफ्थ होची आपनकर सिंपली आपण कहि परिबे बजेट बजेट ठीक अछि ये ओवरऑल पांचटी टॉपिक को थॉरोली देखंतु बाकी देखंतु आपण माने प्लानिंग अच्छी ये सब जिनस डेफिनेटली देखी कि जिवे बट ई जो पांचटा को भल से कवर करिया पई चेष्टा करिवे ठीक अछि भल से कवर करिया पई चेष्टा करिवे ओके फाइन काली काली एक्चुअली प्रोबेबली काली क्लास बोधे नाही नेक्स्ट आपण जो यूट्यूब चैनल रे आपण देखि नियंतु आपण सेठी शेड्यूल मिली जिवो केबे केबे मोर क्लासेस गुडी को अछि कारण काली प्रोबेबली क्लास नाही तापर डेफिनेटली क्लास आपण को देखिबा को मिलिबो पर्सनल टेलीग्राम चैनल आपण जॉइन करि परिबे मो आपण को एठी मेंशन कर दोउची JTADHARI जटाधारी सर फॉर यू करिकी आपण ए टेलीग्राम चैनल को जॉइन करि परिबे जटाधारी सर फॉर यू करिकी मोर पर्सनल टेलीग्राम चैनल एटा आपण चाहिए एटा को जॉइन करि परिबे ठीक अछि हैप्पी दिवाली टू एवरीवन हैप्पी दिवाली टू स्वागतिका and every students so stay safe and celebrate a safe Diwali ठीक अछि if possible say no to crackers because we need a green Diwali right Jatadhari sir for you ये होची पर्सनल टेलीग्राम and rest ये टॉपिक्स गुडी को कवर करिवे फॉर द इकोनॉमिक्स राइट सो थैंक यू सी यू सून आपण सब्सक्राइब करंतु चैनल को सेठी आपण रेगुलर अपडेट्स मिलिबो मोर केबे केबे क्लास होची इकोनॉमिक्स ठीक अछि थैंक यू